I'm sorry. What is the meaning of grievance? So you are admitting that you don't have a knowledge about the language. So what is the meaning of final report, sir? Sorry, sir. Sorry, sir. What is the meaning of FR? And I would request both the lawyers not to speak a single word unless and until you're in. What is the meaning of pretext? हो गया सर. अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना. वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है. इफ यू डोंट नो नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, एसपी है, नहीं कानून मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, एसपी तो है. अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है. सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास. And why did you use the word grievance? Now, Mr. SP, come forward. Please read out your first affidavit. What have you mentioned? And don't forget that just now the word grievance has been used. Is it your first posting? No, sir. Not first posting. As SP, sir, it is. I know you are SP. Sir. I can find it out from the stars. Second posting as SP. Second posting, right, sir. कितना टर्म हो गया आपका एज एन एसपी, सर? Sir, I was posted in Jhabua before for how many days? 17 months, sir. 17 months. So this is the 18th or 19th month as SP. Yes, sir. 18th. Sir. 18th month. तो 1.5 साल हो गया है आपको. So you must be aware of the legal provisions, right? You must be aware of the language which is to be used. You must be aware of the fact that some words may indicate the arrogance on the part of the deponent. Just don't forget that just now it has been held that the grievance is that the closure report was not filed. Right? Now that grievance has been attributed to the court. Right? That means you have an arrogance of saying that I have a guts to object to your conduct. Why you are saying no? I'm sorry. What is the meaning of grievance? If the court had put a question to you, you had pointed out that the sanction was granted. We were sitting over that closure report for the last 5 years. So you mean that the court should not say anything or should not raise any doubt about your integrity? Are you above the law? This is what you want to communicate. Don't say no. Apart from the documents and your conduct. Sorry for the language, sir. Sorry for the language. So you are admitting that you don't have a knowledge about the language. You can speak whatever you want. Now please come to the affidavit. Affidavit which was filed yesterday. दिखाइए कॉपी मुझे को उसकी. I don't think whether it is on record or not. फाइल कर दिया था आपने कल, तो उसकी कॉपी दीजिएगा. Now I will request you to keep the word grievance in mind. Right? This affidavit was signed by you. You must have gone through it. You must have dictated it. Right? Please come to paragraph 3 of your affidavit. Paragraph 3, sir. Paragraph 3, sir. Please read it out, sir. That in the aforesaid note, it has been indicated that the then Superintendent of Police, Chhatarpur, has permitted for the filing of Khatma report in crime number 14/2019 on 14/9/2019. Right, sir. Then, sir, paragraph 4. Sir, that on the aforesaid pretext. What is the meaning of pretext? And don't forget the word grievance, which has been used today. You have so much arrogance in you. You have so much of arrogance on you. This is what my personal impression is, not finding that for your actions, how can I raise a doubt or how can I raise a question? What is the meaning of pretext?
Please point it out, sir. I am very weak in language, sir. I may be wrong. What is the meaning of protest? I'm sorry, sir, for that. For what, sorry, sir? In the affidavit, you are saying that since this SP had granted sanction to file closure report sometime in 19, and it is still lying in the police station, therefore on that protest I have issued the order to file affidavit. Is it not the arrogance of the superintendent of police? It was not meant, sir. I'm sorry. Pardon, sir? I'm sorry, sir, For what? for the language. For the language. And what about the today's statement that the grievance is? Whose grievance is, sir? Whether he is appearing for the complainant or he is appearing for the accused? Whether he has come for the direction to file the charge sheet or closure report, or he has come for quashment of the proceedings. At least he is not having any grievance with regard to non-filing of the closure report. This is the height of the arrogance. Sorry, sir. Sorry, sir. What is the meaning of FR? And I would request both the lawyers not to speak a single word unless and until your assistance is required. So you both can have your seats, sir. No difficulty. So what is the meaning of final report, sir? So you don't know even the meaning of final report. Under what provision of law you people are authorized to investigate the matters? You even don't know that also, I think so. Why you are not replying, sir? I am just trying to find out the legal knowledge of the superintendent of police, who is using the word grievance and protest. Sorry, sir. नहीं अरे तो मैं जांच जिसकी भी गलती हुई आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया। हो गया सर, अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना। वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन इज, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं, उसके बाद एरोगेंट हैं, तो ठीक, अच्छी बात है। सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास। Sir, I'm sorry, sir. नहीं, don't say sorry. Okay, chapter over. That chapter is over. The chapter of arrogance is over, sir. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुपरिंटेंडेंट जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है कि सर झुका के खड़ा है। It was not meant like that. Forget about that. That chapter is over, sir. I'm saying again and again. Please accept that chapter is over. It may crop up at a later stage. I won't give you guarantee that it will not pop up at a later stage. First of all, tell me under which provisions of law the investigation is done by the police. बताइए sir. At least you are holding the post of superintendent of police for the last more than 1.5 years. And before अच्छा सर, जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो आपने कहा ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, राइट सर? इस बीच में कोई और प्रोसीजर भी होता है क्या बिफोर द ट्रायल कोर्ट? कुछ और भी प्रोसीजर होता है क्या? नहीं मालूम आपको? जस्ट से यस और नो। इफ यू डोंट नो, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, एसपी है, नहीं कानून मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, एसपी तो है। बताइए जैन साहब, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है।
और आप सर झुका रहे हो बार बार। आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। तो आप ये बताइए कि खात्मा रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद वेदर द ट्रायल कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और डायरेक्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? फरियादी को सब बुला सकते फरियादी को बुलाते हैं। और अगर आप क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हो तो फरियादी के इस वैल्यूएबल राइट से आप उसको वंचित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर। आई पर्सनली इंक्वायर। फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल, मैंने देख लिया आपका नॉलेज कितना है। आप ऐसे आदमियों को प्रमोट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने ऊपर बैठा लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है कि मैं ये कहूं कि ऐसा करो या वैसा करो। आई एम नॉट सपोज टू रन योर डिपार्टमेंट। आप प्रमोट कर दो ना, डीआईजी बना दो कल उनको, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसिडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे सर? नहीं, आपका क्या व्यू है? अभी आपका बड़ा ग्रीवेंस है ना, कि बड़ा ग्रीवेंस है, हाई कोर्ट का बड़ा ग्रीवेंस है कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ग्रीवेंस लेके आए हैं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ, डोंट वरी। आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, वैसे पूछा। नहीं, क्या कहेंगे, क्या बताइए तो। दिस इज रॉन्ग सर। हम्म गलत है। गलत है तो ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है सर? नहीं होना चाहिए। क्यों किया गया? बताइए तो। सर आई पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, हाँ पहले यह बताइए कि क्यों किया गया ये, क्यों किया जाता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? Should I now draw an inference that you are trying to protect the guilty persons? Why should I hand over the inquiry to you? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। You are afraid of, to that extent, of your subordinates. This is what you want to communicate. What? No, then why you are not saying? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच, जिसकी भी गलती होगी। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, being the senior officer who is not afraid of the subordinates? ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबॉर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है?
मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। मैं सब एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा आपका, चिंता मत कीजिएगा सर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट remain silent, otherwise you will be defaming your own department and your own post. Don't do that sir, please. बताइएगा सर, क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया, क्या कारण हो सकते हैं? There could be, sir, malified intention. मैलाफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलाफाइड इंटेंशन फॉर To help someone. to help someone by misusing Misusing the law. law की ऑफिस, to give undue advantage to someone by misusing your office। और लो भैया, दे दो इनको, पढ़िए सर। सेक्शन 7 पढ़ लीजिए उसको। आप ढूंढिए जिसको मैं बताना चाहता हूं, मुझे पता तो चला कि आप ढूंढ भी पाए कि नहीं पाए उसको। कौन सा प्रोविजन है सर जो इस केस पे लग सकता है? Yes. पीसी एक्ट में पनिशेबल है? है सर? जैन साहब, जी सर। किसी को अनड्यू एडवांटेज अपने ऑफिस को मिसयूज करके देने का जो प्रयास है, इज इट पनिशेबल अंडर पीसी एक्ट और नॉट? आप जरा पूरा पीसी एक्ट पढ़ के बता दीजिए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज एग्जम्प्टेड। नो। देख लिया ना अपने अपने एसपी को, अब आ जाइए, अब आप ही आ जाइए। सुन लीजिए, why should I hand over the inquiry to this person who is afraid of his subordinates, who doesn't believe in upholding the law, who believes in protecting his subordinates? I am not giving any finding. I am not giving any finding. Mr. Ganguly, try to understand the things. Try to understand the things. बड़े casual affidavit था कल इनका, making a grievance against the court that on that protest I have been asked to file the affidavit. और आज आके तो और arrogance की हर line cross कर दी that it is the grievance of the court. This is what you want to communicate, and this is the attitude of the police department towards the law and towards the citizens of the country. But no, I apologize. I don't believe in your words. I believe in your working. Is it the working of the superintendent of police? I will not consider anything. I will not consider anything. Superior authority may look into the. Yes, superior authority कौन सी होगी? Higher authority than the some. हाँ, highest authority कौन है? It may not be highest, but IG. क्यों? Right now, when the elections are going. कोई बात नहीं, हम 3 महीने देंगे, चिंता मत करो। I know elections are going on, and your DGP must be busy in that. आपको डर किस बात का है एसपी को कि ये अपने डीजीपी के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं डरते आप अपने डीजीपी से? डरते ही हैं सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि फिर some IG rank officer. Why IG? आपके पास और कितने डीजीपी हैं? There are 7. नाम बताइए किसी एक का भी, सबके नाम बताइए, उसी में से रख देते किसी को। अभी आपको 5-6 स्पेशल डीजी हैं, I'll give the name. जी, I'll give the name. Anyone can be interested.